an object moved from rest with uniform velocity horizontally and uniform acceleration vertically. Which graph showing the variation with time of the displacement of the object from its initial position is correct? So, alright everyone, so सबसे पहले हम keywords को highlight करते हैं. So first keyword is rest, and rest means कि initial speed is 0, right? And the second keyword is uniform velocity horizontally. Alright, so uniform velocity को हम simple words में constant velocity भी बोलते हैं. And the third keyword is uniform acceleration. Uniform acceleration को हम constant acceleration भी कहते हैं. Alright, and he is asking which graph showing the variation with time of displacement. Means कि it will be a displacement versus time graph, and we know that the gradient of displacement versus time graph is velocity. And the next keyword is initial position, and the initial position is that object moves from rest. Means कि आपका displacement versus graph origin से start होगा, right? So A तो origin से start हो रहा है, B भी origin से start होता है, C भी और D भी. Okay, so now let's move on to the next keyword, and it is constant velocity. I hope everyone remember कि constant velocity का displacement versus time graph is a straight line with constant gradient, right? And constant gradient is constant velocity, and it is for horizontal component, right? So horizontal displacement देखते हैं. Horizontal displacement हमारे पास option A में है. Graph is not a straight line with a constant gradient, right? So ये तो गलत है. Option B में is vertical displacement, तो इसको skip करें. Option C में is horizontal displacement, and again it's not a straight line with a constant gradient, so option C, B गलत आंसर है. So now it's between B and D. And for B and D हमारे पास vertical displacement है, और vertical displacement के लिए जो information given है that is uniform acceleration, and uniform acceleration is basically the constant acceleration, and constant acceleration means that the velocity of object is increasing every second. So और अगर velocity increase कर रही है so displacement भी increase करेगा. So uniform acceleration के लिए displacement versus time graph में डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करना चाहिए और इसका ग्रेडियंट भी इंक्रीज करना चाहिए, राइट? सो ऑप्शन बी में अगर आप देखो, सो डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज कर रहा है बट ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी ऑब्वियसली ही करेक्ट होगी. देखें, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज कर रहा है और उसका ग्रेडियंट भी इंक्रीज कर रहा है, राइट? देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट.